एक मिनट रुक जाओ, रेडी होने दो। चलो ये कर लेते हैं। दिस कुड बी अ ग्रेट इंट्रो। Hi, I'm Akshay. Hi, this is Saurabh, and you are listening to the Founder Thesis podcast. We meet some of the most celebrated startup founders in the country. And we want to learn how to build a unicorn. Hi, I am Anurag Kedia. I am the co-founder of Pilgrim. Anurag Kedia is the type of entrepreneur that learned the basics of running a business in the era when there was virtually no VC who would fund a bunch of young entrepreneurs based on an idea on a paper napkin. He started a day spa chain with his friends from IIMA, and they made multiple mistakes before learning how to acquire customers and scale up revenues. While running the spa, Anurag was responsible for all the products used at the spa and also for their private label products. He took the learnings from that to start all natural D2C beauty brand Pilgrim. Pilgrim is bringing the approach of fast fashion to beauty products. They launch 2 new collections each year, and each collection is inspired by the ingredients and traditional beauty practices of a region. So far, they have launched a Korean beauty collection and an Italian collection. This approach sets them apart from all other players in the field, giving them the ability to create a year-long buzz and engage customers with a steady pipeline of new and exciting products to try. Here's Anurag telling Akshay Dutt about Pilgrim. Anurag, what is home for you? Like, where did you grow up? Akshay, I come from a town called Bilaspur in Chhattisgarh. वहाँ पे हम सब लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। बॉम्बे में 20, 22, 25 साल हो गए हैं, तो मेरी भी हिंदी बम्बईया हो गई है। Otherwise, while I'm a Marwadi, but everybody in Bilaspur just speaks phenomenal Hindi. It's a delight to kind of hear the Hindi we speak at Bilaspur. Fairly well-to-do city. छोटा सा टाउन है, बहुत बड़ा नहीं है, तो और बहुत रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। वहाँ पे आपको कभी ऐसे भागा-दौड़ी, अभी तो चीज़ें चेंज हो गई, मुझे भी 20-22 साल हो गए निकले। बट स्मॉल टाउन है, अपना बहुत चार्म है, सबको एक-दूसरे को जानते हैं। तो गुप्ता जी, शर्मा जी, खान साहब, सब यू नो सारे वैसे सब एक-दूसरे को जानते हैं। It was a lot. I have a lot of fond memories growing up in a town like that, and हमारा जो स्कूल का ग्रुप है अभी भी बहुत एक्टिव है। अभी भी मैं साल में 1-2 बार जब भी मौका मिलता है, 1 साल में नहीं मिला बिकॉज़ ऑफ द करंट सर्कमस्टेंसेस, जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अभी भी यदि कोई बिलासपुर या छत्तीसगढ़ से भी मुझे कोई मिल जाता है, तो एक अलग अपनापन वो तुरंत महसूस होता है। So, like, when you were a teenager, तो क्या dreams, ambitions थी, या आपके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप क्या करोगे आगे जाकर? तो एक्चुअली मेरे मदर एंड फादर की बहुत अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस थी। My mother was always a studious kind, so she's an MA in Sanskrit. She was the Bihar board का state topper. So her study, college life was full of study. School life, college life, she was like throughout rank one वैसा वाला. And my father was never the studious kinds. तो बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को सुनने मिलता है कि पापा तो फर्स्ट आते थे। मुझे मेरे पापा ने कभी नहीं बोला कि मैं फर्स्ट आता था, बिकॉज़ तो वो क्या करते थे आपके फादर? So he's an engineer. He studied in Jabalpur Engineering College. और वो पॉलिटिक्स करते थे कॉलेज में। तो हाँ, तो lot of his college buddies, he also fought an election at some point of time which he didn't succeed in. तो वो लोकल इलेक्शंस जो होते हैं वो सब किया है उन्होंने। He was very active in the local politics for a fairly long period of time. But that was he's an entrepreneur himself otherwise. Straight out of college when he was 21, 22, he said यार नौकरी नहीं करना है। हाँ, that is the only thing, he said मैं जो करना है अपना करूँगा। तो he's done various businesses, kept changing with time, and he's now 72, 73, but even today he's working and he works probably harder than me. तो अब यार उम्र भी मेरी 42 साल हो गई है, राइट? सो आई एम अनलाइक मेनी अदर फाउंडर्स यू विल बी स्पीकिंग टू हु आर इन द अर्ली 20s, लेट 20s। जब हमने पढ़ाई की तो वहाँ पे मिशनरी स्कूल्स ही होते थे और कोई ऑप्शन नहीं था। सो आई स्टडीड इन अ मिशनरी स्कूल, एंड बाद में डीएवी पब्लिक स्कूल हमारा नया खुला था, व्हिच वाज स्पॉन्सर्ड बाय एसईसीएल, जो कोल फील्ड्स की मैं बात कर रहा था। तो दे हैड गिवन अ लॉट ऑफ फंड्स। मेरा आईआईटी में 97 में सिलेक्शन हो गया, बट 97 फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स वाज अ वेरी स्पेशल ईयर। पर फिर भी you cracked IIT Bombay. It's like a pretty big deal. हाँ, वो भगवान ने थोड़ा साथ दिया, तो आईआईटी बॉम्बे पहुँच गया, एंड वहाँ पे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज था। अक्षय, जब मैं पहुँचा, तो बिलासपुर बिकॉज़ इट वाज़ अ स्मॉल टाउन, बहुत जल्दी मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिल गया था कि अच्छा स्टूडेंट है,
टीचर्स पसंद करते हैं, वो स्मॉल टाउन्स में आप देखोगे बहुत जल्दी हो जाता है। तो आईआईटी में जब गया था ना तो थोड़ा-सा मैं हवा में था कि यार मुझे तो बहुत कुछ आता है। 1 हफ्ते में सारी हवा निकल गई एंड मैं बिल्कुल ज़मीन के भी नीचे चला गया, ज़मीन पे भी नहीं बिकॉज़ देन यू सॉ यार जो भी आता है उससे 10 एक्स बेटर लोग मतलब बाजू में देखो तो ये नहीं ज़्यादा नहीं फुटबॉल खेला है नेशनल लेवल पे। उसके बाजू में देखो तो इसको पूरी डिक्शनरी पता है एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग लाइक स्टडीज़ राइट? उसके बाजू में देखो तो इसका खुद का रॉक बैंड है जो इसने क्लास 9th में चालू किया था। दैट इज़ द काइंड ऑफ टैलेंट आई केम अक्रॉस एंड आई सेड यार यहाँ तो बहुत फाइट मारनी पड़ेगी टू सर्वाइव बट देन यू फाइंड योर फीट। आई बिकॉज़ आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन व्हाइल वी स्टडीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल हमें बात तो हम हिंदी में ही करते थे। So that was also something which pulled me back for a considerable period of time. यार मुझे इंग्लिश बॉम्बे के बच्चों के जैसी नहीं आती है या दिल्ली के बच्चों के जैसे नहीं आती है एंड आई यूज्ड टू हेजिटेट स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑलमोस्ट माय एंटायर इंजीनियरिंग। मैं इंटरव्यूज के लिए भी जाता था तो मैं हमेशा सोचता था यार मेरी इंग्लिश कमजोर है कंपेयर टू द अदर किड्स हु आर देयर इन द And you cracked again the top B school in India, IIM Ahmedabad. अगेन थोड़ा भगवान ने साथ दिया एंड हैड some very good friends and mentors I will say. So I want to specifically, recall one of my friends who has a very complex name. Hopefully, I'll get it right. Auguste Diabru Zuze. He was my senior at IIT Bombay, and he was a walking dictionary. तो आप उसको वर्ड बताओ, वो वर्ड का ग्रीक एंड लैटिन रूट बताएगा और उसके 5 क्या और वर्ड्स उससे पैदा होते हैं वो भी बताएगा. He really coached me and mentored me on the areas I was not very strong in. And then I had a couple of other friends who were preparing for GMAT, all of that. So साथ में थोड़ी पढ़ाई हो गई. एंड आई एम बैंगलोर छोड़ के सारे कॉल्स मुझे आ गए थे एंड आई थिंक बिकॉज आई एम बैंगलोर गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू द एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस व्हिच यू हैव एंड बाद में थैंकफुली सारे कन्वर्ट भी हो गए बट बिकॉज अहमदाबाद हो गया था तो वो फॉर्मूला सेट था कि यार अहमदाबाद हो गया तो फिर बाकी क्यों चलो तो आई वेंट टू अहमदाबाद So your job was in Bombay only. माय जॉब वाज इन बॉम्बे तो पवई के पास में सीब्स में जॉब थी So IIM Ahmedabad में जाके फिर how did that shape you? Like that 2 year period. तो आई एम अहमदाबाद अगेन द सेम डेजा वू फीलिंग ऑफ कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ हैपेंड इन द फर्स्ट 1 वीक राइट आफ्टर आईआईटी आई थॉट कि यार अब तो लाइफ देख ली है अब आई विल नॉट फील आउट ऑफ प्लेस एनीवेयर बट आई एम अहमदाबाद फर्स्ट 1 वीक वाज एग्जैक्टली द सेम एज आईआईटी बॉम्बे यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ बिकॉज द फर्स्ट कोर्स विच वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू वाज अकाउंट्स and there was this CA ranker who was sitting in front of me and he spoke about something called contribution margin. मैंने बोला यार ये क्या बात कर रहा है ये तो नाम ही नहीं सुना है कभी ना तो अकाउंट्स में बहुत मुश्किल हुई मुझे फर्स्ट टर्म में खासकर but after I settled in again after in a couple of weeks for a change I was really enjoying my studies in a lot of learnings academically and otherwise at IIM IIT में the learnings are of every other kind but academically because chemical engineering तो ज़्यादा सीखी नहीं मैंने life में but MBA days में वो थोड़ा सा change हुआ I actually was learning a few things academically also and made some great friends so that network really which network is the professional word but the friendships which I developed both at IIT and IIM have really stayed with me and that is what I think is the support system which I have today. So where did you get placed from campus? So campus say I had 2 offers. I had applied for 2 jobs. Luckily I got both. I had applied for HUL because it was a sales and marketing role and I had applied to TAS Tata Administrative Services. Both for day 1 jobs. Day 0 में because खाली consulting companies और investment banks आते थे मैंने apply नहीं किया था. I got placed in both and I chose to go to TAS. Because वहाँ पे मुझे लगा sales stint skip कर सकते हो. TAS gave you a few liberties at least in the old days. You could do a brand management stint directly. तो वो मुझे बहुत exciting लगा. So I went to TAS, worked for TAS for 14-15 months. And then, I thought I should, get a little more. And first 15 months में TAS में you get rotated between different Tata companies. So it is almost like a mini consulting engagement. That was a lot of fun. And that led me thinking कि यार मुझे कभी consulting करना नहीं था. But ये project वाला mode मुझे पसंद आ रहा है. And then I applied to KPMG to become a consultant.
व्हाई केपीएमजी? बिकॉज़ एक दोस्त केपीएमजी में काम कर रहा था। तो मैंने बोला यार रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दे। So and then I moved to KPMG. I again worked there for a year and a half. Uh, and वो प्रोजेक्ट वाला मोड चल रहा था and I had a lot of fun at KPMG. Learned a lot. Again made some deep connections there. Who continue to be in touch. ये 3 साल की मेरी कॉर्पोरेट स्टिंट थी। 1.5 साल एट टास्क, 1.5 साल एट केपीएमजी। उसके बाद then I got chatting with a batchmate of mine who's also from IIT Bombay and a batchmate from Ahmedabad. He was with HUL actually. He was with Hindustan Lever. His name is Saurabh Garg. And he was exploring some business ideas to start out. And then we got chatting and उसने बोला यार क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला नहीं बढ़िया चल रहा है सब केपीएमजी में। He said नहीं मैं कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। And it so happened that we finally kind of got together without ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मुझे बिजनेस करना है लाइफ में। उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं था। I was pretty happy in the place I was. उस टाइम पे तो वो कूल भी नहीं था ना, जैसे आज तो कूल है ना स्टार्टअप। नहीं उस था ही नहीं उस टाइम पे स्टार्टअप कल्चर कुछ था ही नहीं। हाँ, उस टाइम पे तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, स्टार्टअप नहीं कर रहे हो। राइट राइट राइट। फिर देन सौरभ एंड मी गॉट चैटिंग एंड देन सौरभ का एक बैचमेट था, बैचमेट एज इन कलीग एट HUL, Sunil Rao. He also was interested. Then the three of us came together, and there were a lot of business ideas which were thrown around. Uh, वो बहुत ही MBA स्टाइल में हमने किया। ऐसा नहीं था कि हमें ये पैशन है, ये हमने लिस्ट बनाई 150 आइडियाज की, उसको 25 किया, उसको 5 किया। कैसे कैसे शॉर्टलिस्ट, क्या क्राइटेरिया था, मतलब व्हाट वर यू लुकिंग एट? तो एक जो चीज कॉमन थी सौरभ, सुनील और मेरी, कि हमें कंज्यूमर ब्रांड्स एक्साइट कर। वो दोनों तो हिंदुस्तान लीवर में काम ही कर रहे थे एंड मुझे तो ब्रांड्स करना था, इसीलिए मैं टास्क गया था। और केपीएमजी में भी मेरे कंज्यूमर साइट्स में एंगेजमेंट थे। तो बस एक ही क्राइटेरिया था कि यार जो करेंगे कंज्यूमर स्पेस में करेंगे। फिर उसके बाद जो बिक सकता है, जो दिख रहा है उसकी लिस्ट में डाल दो, वो लिस्ट में डाल दो, यदि वो कंज्यूमर स्पेस में है तो, राइट? देन वी आल्सो लुक्ड एट द वेस्ट, की वेस्ट में क्या हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल टॉयज बिक रहा है वेस्ट में, टॉयज की रिटेलिंग हो रही है, बट इंडिया में नहीं हो रही है। अ, है ना? टॉयज आर उस समय पे बहुत बड़ा था। यदि विक्टोरिया सीक्रेट और लॉन्जरी इज बिग इन द वेस्ट, बट इंडिया में अभी नहीं है, राइट? तो ऐसे करके आई वाज पैशनेट अबाउट थिएटर। आई यूज्ड टू एक्ट एंड डायरेक्ट अ लिटिल बिट इन कॉलेज। तो हमने बोला कैन वी एक्चुअली मेक थिएटर कमर्शियल वेंचर। उसके अराउंड भी एक बिजनेस प्लान बनाया। इंसिडेंटली स्पास भी एक बिजनेस आइडिया था कि यार ये स्पास भी ना वेस्ट में भी बड़ा है, ईस्ट में भी बड़ा है, इंडिया बीच में है, एंड यहाँ पे कोई स्पा की बात नहीं करता है। तो वी लुक्ड एट अ कपल ऑफ थिंग्स की कंज्यूमर ब्रांड में होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, एंड कोई लार्ज कॉर्पोरेट थ्रेट वहां पे इमीडिएट नहीं होना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द फिल्टर्स वी यूज्ड, कि कोई टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बोल रहे हैं कि कल हम इसमें घुसने वाले हैं, बिकॉज देन दैट स्पेस वी विल नॉट बी एबल टू कम। तो जब ये फिल्टर्स लगाए तो देन अ फ्यू वी काइंड ऑफ नैरोड डाउन टू, एंड द मोर वी लुक्ड एट स्पास, आवर कन्विक्शन काइंड ऑफ ग्रू कि हमें ये ब्यूटी वेलनेस स्पेस कुड बी इंटरेस्टिंग। ब्यूटी वेलनेस में स्पा, उस समय पे आयुष करके एक हिंदुस्तान लीवर का ब्रांड होता था, which was Ayush is still there in a modified avatar, but उस समय पे आयुष used to be an Ayurveda clinic, and because सौरभ एंड सुनील दोनों HUL से थे, थोड़ा इन्फ्लुएंस वहां का भी था, and hence we said ये जो आयुर्वेदा में हो रहा है, can this be done with Western therapies, and we will also do Ayurveda, but we will not be an Ayurveda clinic, we will be a day spa. And the more we spoke to consumers, the more we researched, our conviction kind of grew on that, and eventually 2007-8 में फिर हमने 4 फाउंटेन स्पास पुणे से 2 सेंटर लॉन्च किए। अच्छा, एंड हाउ डिड यू फंड इट? क्योंकि दिस मींस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ना? हाँ, स्पा में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, केपेक्स हेवी है काफी। So when I was in Chennai during my KPMG days, one of my batchmates, Ankit, he used to be the relationship manager at Kotak Mahindra. So he had all kinds of HNIs who he was in touch with. And मुझे तो कोई भी बोलता था कि I can do an angel investment, मैं उसके पास पहुंच जाता था। तो, तो अंकित के साथ मैं डिनर कर रहा था, तो अंकित को मैंने बोला यार तेरे पास तो इतने बड़े-बड़े HNIs हैं, हमारी $1-2 मिलियन की फंडिंग कराओ। तो उसने सोचा, he said actually one of my clients is looking to make investments. तो मैं उनसे बात करके आई विल टेल यू वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन इवैल्यूएटिंग दिस। तो द जेंटलमैन who he was talking about was Mr. Krishna Ramanathan, and he introduced me to Krishna, and I met Krishna, and the original business plan we had pitched to him was not for spas, it was for something else, but it seems that they liked whatever interactions they had with me and Saurabh and Sunil,
एंड व्हेन वी फाइनली सेड नहीं हम वो नहीं कर रहे हैं, हम तो स्पास खोल रहे हैं, दे सेड कि ठीक है अभी हम वी लाइक यू ब्रॉडली, सो वी वुड लाइक टू थिंक कि यू गाइस विल फिगर आउट कि कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, and we will invest some money. So we got a seed investment of let's say 2 crores odd in the first round. Eventually, they kept supporting us further, and that's how we got funded and we could do the capex for the first two spas. So you must have had to give up a very sizable chunk of equity, ना? क्योंकि उस टाइम पे तो वो मतलब वैल्यूएशन उस टाइप की नहीं थी जो आज मिलती है. Absolutely, absolutely. So it was not a negotiation. It was this is the deal, right? While Krishna and his family was always very professional and fair to the extent, but so that whatever the deal was, and capex heavy businesses may they're actually not very VC friendly to that extent because leverage is not very high, unlike tech businesses and some of the other businesses. So, but we were happy with the deal which was there on the table. हमने बोला ये बड़ा होगा तो सबके पैसे बन जाएंगे. But like majority was still with you, majority stake. हाँ नहीं. So it was I'll tell you the deal for 2 crores. I don't remember the exact numbers, but 20-25% is what they had taken, or yeah, 25-26%. So it was not a bad deal for first time entrepreneurs. It is a pretty good deal. हाँ. So they were pretty fair about the entire thing. In fact, first deal हमारा जो था स्ट्रक्चर्ड था. IRR हमने एग्री किया था, बट एक साल के बाद वी रिक्वेस्टेड देम कि यार ये IRR हमें नहीं समझ आ रहा है. जो भी आपको प्राइस एग्री करना है अपफ्रंट एग्री करके उस पे आप क्लोज कर दो. ठीक है, तो फिर with this 2 crore then you started 2 spas in Pune. And why Pune? Why not Bombay? So Pune, because we thought the cost of experimentation in Pune was lower than in Bombay. And Pune, there were pockets which were like the South Bombay or the most poshest parts of Bombay. So you go to a Koregaon Park, which is as posh as it gets, right, in the country. You have the ultra HNIs and the cool crowd staying there, and you go to an Aun, which is affluent but fairly traditional, or used to be fairly traditional, 15-20 years back. So we said we'll go to the affluent pockets, but we will try and serve different kinds of consumer segments and see whether there is acceptance across segments. And Pune में real estate cost was lower, marketing was cheaper. आपको यदि print में कुछ add करना है, radio में कुछ add करना है, Pune was far more cheaper than Bombay. So otherwise none of us were from Pune actually. हमारा पुणे से कोई connection नहीं था, तीनों का. But we said Pune is the right place to do a pilot. And hence we went to Pune. So how did you get customers then? मतलब आपने वो खड़े कर दिए 2 spas फिर फिर उसके बाद customers नहीं आए. So that was the so that was the starting point. या जो customers आ रहे थे, they were not good enough to even break even, forget profitability. क्या चार्ज करते थे आप? हम उस समय पे हमने जब लॉन्च किया था, if I'm not mistaken, हम 599 inclusive of taxes for a full body massage charge करते थे. Which is like a 60-minute thing. For a 60-minute massage, yes. Right? तो शुरू के 1-2 महीने के हमें लगा था कि दुकान खोली और बाहर लाइन लगी होगी यहाँ पे तो. बट वो लाइन में 3 लोग खड़े थे, सौरभ, सुनील और मैं. दोनों स्पा एक साथ खोल दिए थे बिकॉज़ वी सेड कि पेपर में ऐड डालेंगे, कॉस्ट तो सेम है, तो 2 एड्रेस तो होने चाहिए. आइडियली 4 चाहिए बट 2 तो मिनिमम चाहिए. Typical MBA mindset. हाँ, तो एमबीए ने हमें बहुत स्पॉइल किया, बहुत सिखाया दोनों. तो there was some traffic which was coming in, but clearly not what we had anticipated. Then we started doing everything which we could think of in terms of marketing. And the one activity which worked well in those days was couponing. तो हमने अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग लुकिंग कूपन्स बनाए. 200 रुपए ऑफ, 500 रुपए ऑफ, 300 रुपए ऑफ, जो हमने अलग-अलग लाइफस्टाइल रिटेलर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया. तो आप मोर की उस समय रिटेल आउटलेट आदित्य बिरला ने लॉन्च किए थे. आप वहाँ पे जाके 1000 रुपए की शॉपिंग करो तो आपको 200 रुपए के 2 वाउचर हम फ्री देंगे. इट वाज़ एक्चुअली अ डिस्काउंट कूपन. हम सेंट्रल से ये कर रहे थे और ऐसे करके हम सारे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स के थ्रू ये कर रहे थे कि आपके सारे गेस्ट को आप ये दो. That was one big customer acquisition channel for us. But आपने इतने बड़े brands को convince कैसे किया? Thankfully, they were open. So actually, it was a lot of legwork.
बट ऐसा नहीं था कि वो करने को तैयार नहीं थे। तो एंड दे वर एक्साइटेड बिकॉज़ क्या स्पा बोलने से पुणे में भी ऐसा नहीं था कि बहुत सारे स्पास थे। और एक बहुत ही ना कूल वाइब क्रिएट हो गई थी फोर फाउंटेन्स के अराउंड। लोग नहीं आ रहे थे, बट वाइब अच्छी थी, क्योंकि स्पास थे ही नहीं। तो या तो स्पा 5 स्टार के अंदर थे, ये पहली बार किसी ने डे स्पा खोले थे एंड एम्बियंस पे, इस पे, उस पे हमने खर्चा अच्छा किया था। मतलब वी हैड क्रिएटेड अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स। तो कन्विंसिंग डिड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम मोर के पास गए, सेंट्रल के पास गए, किसी ने 3 मीटिंग ली, किसी ने 2 ली, किसी ने बोला यार सेल के पीरियड पे कर देंगे, अभी नहीं करेंगे या सेल के बाद कर देंगे। The local ecosystem of Pune, all the fine dine restaurants of Pune, they were very, very supportive. तो पुणे में कोरेगांव पार्क में लेन 5, 6, 7 ये वहाँ पे पूरे सारे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं। हमारे ठीक सामने पुणे का वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स कॉल्ड ग्रेट पंजाब। Superb food, and one gentleman called Mr. Gandhi used to own that restaurant. So when Sunil used to go in many of these types. Sunil went and spoke to him, he said नहीं हम प्रमोट करेंगे तुम्हारे स्पा को, कोई दिक्कत नहीं है। So a lot of people decided to support us for a variety of reasons. Uh, and that I think was a big channel for us. थोड़ा बहुत हमने प्रिंट पे भी खर्चा किया, सीखा किस टाइप के एड्स चलते हैं। हम न्यूज़पेपर इंसर्ट्स करते थे, दैट आल्सो वर्क्ड वेरी गुड इन द अर्ली डेज। तो उसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं, तो हमने सारा मार्केटिंग का दिमाग लगा के उसमें अ, एक लेटर डिजाइन किया कि जो एक कस्टमर ही बाकी अपने फ्रेंड्स को लिख रही, व्हिच इज गोइंग थ्रू अ न्यूज़पेपर इंसर्ट, एंड सुबह 4 बजे उठ के हम खुद जाके वो न्यूज़पेपर इंसर्ट्स डलवाते थे। एंड उसका रिस्पॉन्स आता था। थोड़े कुछ रेडियो टाइप्स किए, फिर हमें पता चला कि अच्छा बार्टर डील्स भी होती हैं, कि आप स्पा के वाउचर दे दो और सामने से वो कुछ हमें मेंशन्स दे देंगे। तो देन बाद में हमने एक एक्टिविटी की जिसको हम बोलते थे डोर टू डोर एक्टिवेशन। तो वी डिजाइन्ड अ नाइस एनवेलप इन जिसमें हमने एक कूपन ही डाला एंड उसपे हमने एक इनवाइट बनाया कि यू नो दिस इज अ लेटर फ्रॉम फोर फाउंटेन स्पा, स्पास आर गुड फॉर हेल्थ, आपको मसाज करने से ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, प्लीज कम एंड ट्राई अस। एंड दिस वी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक 30,000 such invitations across the catchments. Our team, so our marketing team, we had one or two people in the marketing team. We had hired one or two young people from Symbiosis का विमान नगर कैंपस, बीबीए के कुछ स्टूडेंट्स थे जो ग्रेजुएट कर रहे थे। तो अविनाश शर्मा was one of our first hires from there, and he actually got this entire activation going. And so many small experiments, some of which failed, some of which succeeded, and then our membership plans really started taking off. तो हमने बोला कि यार इसमें स्पा में क्या है कि लोग आते हैं बहुत खुश हैं। सो द कस्टमर फीडबैक उस समय पे एनपीएस स्कोर पता नहीं था, वाज़ फिनोमिनल। बट लोग यूज़ करके जाते थे और फिर वापस नहीं आते थे। या 3 महीने के 6 महीने के बाद आते थे। और अब सम पीपल फेल्ट इट वाज़ एक्सपेंसिव, सम पीपल गॉट बिज़ी विथ देयर लाइव्स, सम पीपल थॉट इट वाज़ एन ओकेजनल थिंग। मेरा बर्थडे है तो मैं आऊँगा, एनिवर्सरी है तो आऊँगा, हर महीने नहीं आऊँगा। तो वी सेड इनको ना 12 मसाजेस का, 15 मसाजेस का पैकेज बेचते हैं। एंड वी डिजाइन्ड इट इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, and then a sales process was developed on how to sell those packages. All of that finally kind of help us get the traction. Then finally we started breaking even and then started making some money. कितना टाइम लगा ब्रेक इवन में? 1 से 1.5 साल लगा था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, बट 1 साल के आसपास तो लगा था। एंड क्या था ब्रेक इवन रेवेन्यू, मतलब? हाँ, उस समय पर स्पा हमारा 4 साढ़े 4 लाख का ब्रेक इवन रेवेन्यू था पर सेंटर। हाँ, मंथली, बट दिस वाज़ 15 इयर्स बैक। तो आज की रेट में आप 1 एंड हाफ टाइम्स बोल सकते हैं, 6-7 लाख रुपए हो जाए। So and then उसके बाद did you open more spas? You're like, what next? Then Four Fountains went on to become one of the largest day spa chains in the country. Uh, Currently, there are around 27, 28 spas which operate in Bombay, Pune. COVID has been a little bit of a setback, but otherwise, the spas did quite well. There is a lot of consumer love for Fountains. We also started a chain of salons called Jazz Up Salons in Pune, which we subsequently exited to an HNI in Pune. We started a chain of Ayurveda clinics called New Ayurveda Clinics, which also we exited to one of our ex-employees who wanted to buy out the entire brand. They continue to run it. Four Fountains continues to operate pan India. Just that Saurabh, Sunil, and me in 2008, March 2008, the three of us decided to kind of move out
and the team which had been built out, they manage the show now. So we were very fortunate that the senior leadership team was nobody left. So even the team which operates the spas right now, one person has been there for 8-9 years, the other person has been there for 15 years. Uh, so the leadership team really stuck around, and which is what allowed us to Move out, what do you mean by that? Do you mean you sold your stake, or you Operationally, we moved out, and we were doing different things. So Sunil now runs a trading prop book with one of his friends. Saurabh built a very large business in the real estate domain, which is called nobroker.com. Uh, and 2019, I started building Pilgrim. And Saurabh and Sunil are angel investors at Pilgrim. but what was the impetus to not be hands on at four founders? मतलब did you feel कि ये इतना satisfying नहीं होगा, सिर्फ इसी को चलाना, या मतलब क्या था वो? ऐसा नहीं था. आई थिंक 12-13 साल हो गए थे फोर फाउंडर्स चलाते हुए. तो वी जस्ट थॉट कि और कुछ करना है, और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. So this, sorry, you said 2018. 2018. So 2007 to 2018. 12 साल we ran the spas. So it had been a long time for all of us. तो 18 तक क्या स्केल था उसका? What kind of 30 revenue? spas हो गए थे. 2018 we had built around 30 spas. Typically a spa would do annual revenues of, let's say, 80 lakhs to a crore. So network revenue ये था. Just that many spas, most spas in fact were franchised out eventually. तो हमारे बुक्स पे रेवेन्यू केवल रॉयल्टी की आती थी. That was the leverage we created finally. But why didn't you like sell the business? मतलब when you don't want to be operationally involved, so why not get an exit, get big chunk of cash? I don't know, actually ये thoughts आए, लेकिन one, there were no obvious buyers because spa में ऐसा नहीं कि कोई बड़े players हैं. Typically a larger player will acquire you. एक दो जो conversations हुए, we were not happy with the kind of conversations which were happening. So thankfully the capital we had was patient capital, because it was family. The three of us were not in a hurry. So we said ये इतना अच्छा, इतने प्यार से build किया है, तो ये we will not be in a hurry to get an exit, and the investors were supportive. And hence we said कि वो disturb नहीं करेंगे जो अच्छे से चल रहा है. तो इसमें आपका क्या रोल था? Like, between the three co-founders, what were you responsible for? So the roles changed a little bit, but one of the key responsibilities which stayed with me throughout the journey was what we called as projects, which was basically expansion of the spas. So identifying which city to enter, within the city, which catchment to enter, what real estate to go and acquire there, how much rent to pay, signing up of franchisees, explaining them the business model and explaining them how the entire business works, then ensuring that the interiors of the place is done, and then hand holding the team till the time go live of the spa would happen. Once the go live would have happened, then the marketing and operations team would typically take over. If you like to hear stories of founders, then we have tons of great stories from entrepreneurs who have built billion-dollar businesses. Just search for the Founder Thesis podcast on any audio streaming app like Spotify, Ghana, Apple Podcasts, and subscribe to the show. So you ran these experiments of the saloon and the Ayurveda clinic, which eventually you decided to exit. So what did you learn from those experiments? See, why we had entered those businesses were because we thought they were very complementary businesses. बट हमने अलग अलग ब्रांड्स बनाए. हमने 4 फाउंटेन्स का ही सैलून, 4 फाउंटेन्स का ही आयुर्वेदा क्लिनिक नहीं खोला. ब्रांड बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन एंड इट टेक्स टाइम. तो बाकी काफी सारी बैकएंड की लर्निंग्स थी, मार्केटिंग की लर्निंग्स थी जो हम अप्लाई कर पा रहे थे. बट वी रियलाइज कि जो ब्रांड के एक्सपेंसेस हैं, यदि हमें 3 ब्रांड्स में स्प्लिट करने हैं, दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी डिड नॉट हैव because we never raised large amounts of capital. Right? So that is a challenge we faced, and we said ये छोटा बिजनेस प्रॉफिटेबल बन गया था, चल रहा था अच्छा,
which is why there were people who were interested. बट इसको स्केल करना है तो ब्रांड पे बहुत एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, एंड 3 ब्रांड पे एक्सपेंसेस करना आसान नहीं होगा। Four Fountains was the flagship brand. We said, why not just focus on the flagship brand and let other people who are as passionate about these businesses as us, let them own these babies now that some scale has come. So, what was the idea behind starting Pilgrim? So if you see my entire journey of this 12, 13 years, it was all in the beauty and wellness space. I spoke about projects. There are a couple of other responsibilities which I was handling, one of which was formulations and product sourcing. तो ये सारे बिजनेसेस में आइदर वी वर लाइक इन अ सैलून बिजनेस वी वुड बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स, तो हम लॉरियल से प्रोडक्ट खरीदते थे, या कुछ और स्किन केयर कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते थे। बट स्पा के हमारे जो भी प्रोडक्ट्स थे जो इन हाउस कंजम्पशन के थे, काफी सारे हम ऑयल्स, फेशियल स्क्रब्स, फेशियल प्रोडक्ट्स, बॉडी रैप्स, मास्क, ये सब खरीदते थे। ये सबका डेवलपमेंट वी यूज टू वर्क विद द मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स, एंड ये हमारा प्राइवेट लेबल होके ही आता था, फोर फाउंटेन्स के ब्रांड में आता था। And this responsibility was between the three of us. I used to handle that responsibility. तो इस तरीके के, और सीजनल, यदि मान लीजिए विंटर्स आ रही है तो ठंड बहुत है, तो वी वुड इंट्रोड्यूस अ वार्म रेड थाइम वार्मिंग ऑयल मसाज। समर्स आ रहा है तो वी वुड डू अ एलोवेरा मिंट मसाज। इस टाइप के इनोवेशंस हम काफी करते थे, सीजनल इंट्रोडक्शंस। मेनू हमने 2-3 बार कंप्लीटली रिवैम्प किया। अ, इस पे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा कि यार, हमने जो आइडेंटिफाई किया कि देयर इज़ अ नीड, वो चला कि नहीं चला? व्हाट आर द कंज्यूमर्स रियली लुकिंग फॉर? बिकॉज़ आप कंज्यूमर से जाके पूछोगे, यार आपको क्या चाहिए विंटर्स के लिए, क्या मसाज चाहिए? तो वो बहुत क्लियर आंसर नहीं आने वाला है। तो हाउ डू यू रियली एंगेज विद कंज्यूमर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट इज़ इट दैट दे आर लुकिंग फॉर? अ, मेनू में हम क्या, किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उससे कैसे कन्वर्जन्स इम्पैक्ट होते थे किसी भी सर्विस के? हाउ वुड प्राइस चेंज कन्वर्जन्स? हाउ वुड डिस्काउंटिंग चेंज कन्वर्जन्स? तो ये काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग लर्निंग्स हुई हमारी। तो मुझे प्रोडक्ट्स में काफ़ी मज़ा आने लग गया था। कंज्यूमर ब्रांड्स का जो मेरा फ़ैसिनेशन था, जो मैंने आपसे पहले भी बताया कि हमारा, जब हम फोर फाउंटेन स्टार्ट कर रहे थे, तो एक जो सबसे पहला फ़िल्टर था कि यार कंज्यूमर ब्रांड्स करना है। अभी इसमें 2-3 फ़िल्टर्स और लग गए जब मैं पिलग्रिम के बारे में सोच रहा था। कंज्यूमर ब्रांड्स करना है, ब्यूटी या वेलनेस में करना है, बिकॉज़ यही समझ आता है। तो व्हाई वुड आई गो एंड सेल फैशन और अपैरल और ज्वेलरी और एनीथिंग एल्स जो मुझे समझ नहीं आता है। बट मुझे ब्यूटी वेलनेस कंपेयर्ड टू अदर सेक्टर शायद थोड़ा ज़्यादा समझ आता है। ये सेकंड फ़िल्टर था। थर्ड फ़िल्टर फिर मैंने इसमें ये लगाया कि यार, ये जो ऑनलाइन वाला जो गेम चल रहा है अभी, D2C वाज़ अ जार्गन आई डिडन्ट नो। मुझे तो ई-कॉमर्स वर्ड पता था। अ, फिर व्हेन आई मेट अ फ्यू पीपल इन द इकोसिस्टम, दे स्टार्टेड सेइंग, अच्छा D2C कर रहे हो, D2C कर रहे हो। तब मुझे पहली बार पता चला, अच्छा इसको ई-कॉमर्स नहीं बोलते हैं, आजकल इसको D2C बोलते हैं। तो तो मैंने बोला, हाँ, मैं D2C बना रहा हूँ। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग, एंड देन व्हेन आई वाज़ थिंकिंग थ्रू द प्रोपोज़िशन कि यार, अभी D2C करना है, ब्यूटी या वेलनेस करना है, एंड कंज्यूमर्स को सर्व करना है, तो क्या हम ऑफर करें व्हिच इज़ रिलेवेंट टू द कंज्यूमर्स, व्हिच इज़ नॉट एक्जिस्टिंग इन द मार्केट टुडे। एंड अगेन वो एमबीए स्टाइल में मैंने नोट्स बनाने चालू किए। आई लाइक टू थिंक विद अ पेन एंड पेपर, and I used to invite Sunil, my ex co-founder. He was in Bombay. Saurabh had moved to Bangalore because No Broker was based in Bombay. It was based in Bangalore. And salons ke liye we also had another partner called Kunar Gaur. Uh, Kunar is also from SP Jain as Sunil, and he used to head Jazz Up Salons. And then and he comes from a hardcore FMCG kind of experience and background. तो मैं सुनील को, कुनार को घर बुलाता था और मैं बोलता था, यार खाना खिला दूँगा तुम्हें, मेरे साथ 2-3 घंटा बैठो और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, राइट? हमको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको ब्रेनस्टॉर्म करना है कि क्या पॉसिबल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। एंड देन व्हेन वी स्टार्ट एंड वी स्टार्टेड नोटिंग डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ऑब्वियसली वी वर देन टेकिंग दोज़ प्रोपोज़िशंस टू कंज्यूमर्स, डूइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। तो वन कपल ऑफ थिंग्स व्हिच वर फेयरली ऑब्वियस इन द मार्केट वाज़ कि ये जो नया कंज्यूमर था, द मिलेनियल कंज्यूमर जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एज ब्रैकेट टू व्हिच ऑल 3 ऑफ अस, Sunil, Konark and me belong. All 3 is a 40 plus, and we were trying to think about the millennial consumer, right? तो हमारे जनरेशन में इफ यू सी अक्षय,
वॉन्डरलस्ट वाज़ नॉट अ थिंग। हम सबको ट्रैवल करना है। अभी इनफैक्ट वी वर डिस्कसिंग, आपने बोला यार मेरा तो पहला इंटरनेशनल ट्रिप 38 के एज में था। अ, मेरे शायद 3, 4, 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स हुए इन द लास्ट 20 इयर्स ऑफ पोस्ट कॉलेज व्हाटएवर ट्रैवल आई हैव डन। उसमें से भी 1-2 तो कंपनी ने भेज दिए, एक किसी इंटर्नशिप ने बुला लिया, ऑल ऑफ दैट। बट यू टॉक टू अ टिपिकल 25, 28 ईयर ओल्ड टुडे, बैकपैकिंग करके 2-3 देश तो घूमा है वो। पैसे, इट इज़ नॉट अबाउट द मनी, दे आर नॉट लुकिंग फॉर लग्जरी, दे आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंसेस। This wanting to experience the world uh, culturally, through travel was a clearly big thing which was happening. This was a very big trait. The second is, wanting to follow their passion. ये पैशन वैशन बहुत टाइम से चल रहा है, फॉलो योर पैशन, बट एक्चुअली हमारी जनरेशन में लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट डन दैट। यू नो लोग सिक्योर जॉब में बैठे हुए हैं, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, लॉट ऑफ द चॉइसेस हैव बीन driven by what value systems were inculcated either by family, society, education system, all of that. But the new generation is actually, doing things where they think they'll be happier. And money is not the primary motivator for many of them. I'm not trying to generalize, everybody is different. But they're actually trying to think through कि यार life में करना क्या है. The third thing which is very different about this generation is they are very, very sensitive about the what is happening around them. They have an opinion and they are going to state their opinion. They are not going to shy away कि ये politically correct है कि नहीं. And they genuinely care about the environment. खाली बोलने के लिए नहीं. They are genuinely saying कि नहीं यार ये मुझे ये चीजें नहीं चलेंगी. I am willing to pay more to a brand which will do the right things for the society and for the environment about. And that's the kind of consumer needs which we clearly saw were emerging. When we saw this, we said, यार यदि इसके around we have to build an offering. One, as a brand, because the brand and the category, while they are very closely integrated, but the brand has to go, to my mind, the brand has to be larger than the category the brand belongs to. We said if we have to talk and engage with a consumer like this, who wants a borderless experience, that's the word which stuck with us. फिर पूरी दुनिया मेरी है. And then we said यदि इसे ब्यूटी से कनेक्ट करना है, ब्यूटी में भी ये फिनोमिनन एक्चुअली हो रहा था, ऑलरेडी हो रहा था. तो इंडिया में आयुर्वेदा है एंड आयुर्वेदा वाज गोइंग ग्लोबल. Right? There are other countries, other traditions which are also going global. Korean beauty was already a hot thing in Korea, in India, and globally. कोरियन ब्यूटी बोलते हैं, के ब्यूटी बोलते हैं. इंसिडेंटली जापानीज ब्यूटी, जे ब्यूटी भी उतना ही पॉपुलर है. तो ये जब हमने देखना चालू किया, वी सेड यार ये दिस फिट्स इन वेल विद द नीड्स ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स और आज द मिलेनियल कंज्यूमर्स. आई डोंट थिंक इंडिया एंड ग्लोबल कंज्यूमर्स बहुत डिफरेंस रह गया है. Where people want to experience, global cultures at their doorstep, and this is happening in beauty. And Korean beauty brands, Japanese beauty brands are also available in India. The challenge they face is their pricing is not India friendly because उनके कस्टम ड्यूटीज लग जाते हैं जब तक वो आते हैं, उनके ब्रांड के ओवरहेड्स लग जाते हैं. They also need to maintain a price parity across geographies. तो $20 वेस्ट में या जापान में, शायद आप जापान में बैठ के अभी बात कर रहे हो, $20 in Japan has a very different meaning compared to what $20 in India mean. So we said, can we? And the brands are often not relevant because many of these brands are legacy brands. Legacy brands and D2C brands का एक जो difference है कि legacy brands are used to having a monologue. मैं बताऊंगा आपको क्या चाहिए. D2C brands are the reverse. आप बताओ मुझे क्या चाहिए and we will co-create with you. And हो सकता है हमसे कोई गलती भी हो जाए and we will come and tell you यार ये नहीं चला, ये गलती हो गई. बट चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस करेक्ट दैट मिस्टेक. इट इज नॉट अबाउट शाइंग अवे फ्रॉम योर फ्लॉज एंड फॉल्ट्स और एरर्स. इट इज एक्सेप्टिंग दैट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? इनफैक्ट जापान में देयर इज दिस ब्यूटीफुल फिलॉसफी, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट फिलॉसफी, जहां पे वो ब्रोकन सिरेमिक ग्लासेस को गोल्ड से फिल करते हैं कि फ्लॉज को छुपाया नहीं है, उसको हटाया नहीं है, तो और एनहांस कर दिया हमने गोल्ड की फिलिंग से. तो एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज. So we said this kind of a mindset if we have to engage with, so how do we bring this to life? So we said we'll be a happy skincare brand.
We will never, tell you that you are not good enough. A lot of beauty brands in the past have done that. You are not good enough, and you use my brand to become better. Our approach is a little different. We are saying you are already complete. You are happy, already happy, and we would like to and offer you different experiences to help you explore the world. And why skincare? So actually, आप देखेंगे तो ब्यूटी में 3 पार्ट्स है: स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ एंड बॉडी. वी डू ऑल 3. Offer all three. Just that it so happened that consumers started liking our skincare products more than hair and bath and body, and hence the skin portfolio has become much larger. Before we had, so this was not like a planned कि हम skincare में पहले deep जाएंगे. We actually launched all three in the beginning. And हमारा hair care का भी ठीक ठाक response आया, skin का अच्छा response आया. Bath and body didn't do too well for us. While my personal favorites are bath and body products, we have done some very very good work in terms of the product innovations. But probably, the market for bath and body is not as evolved in India. तो थोड़ा सा luxurious and pampering side में है वो market. Skin care, hair care could be a little more basic functionality driven. So we got a good response on hair care. We got a very good response in skin care, and skin care में innovation की opportunities बहुत जल्दी जल्दी आ गई. And hence our skincare portfolio became pretty large very soon. Uh, and the first range which we launched was on this quote unquote hot trend of Korean beauty. So we launched a range called Secrets of Jeju, which is a island in Korea. It is the origins of Jeju Islands is volcanic in nature. So a lot of very interesting ingredients come out from that ecosystem. So volcanic lava ash, white lotus, camellia, very interesting ingredients come out from that. The second tradition which we launched 6-8 months back is a tradition called vinotherapy. Vinotherapy is based on red wine. This is a French, right? Red wine bolne se you would have understood it's a French tradition. That's the second tradition we have launched. We will be launching, a third tradition sometime around Diwali. So every few months we will be launching a new tradition, offering borderless experiences, native borderless experiences to our consumers. That's the core thought. There's also something called Pilgrim code we follow. It consists of six different values. Some of the key values are we are a clean beauty brand, which means that we don't use any toxic ingredients. Traditionally, a lot of ingredients have been used by beauty brands which are not good for hair and skin, but uska feel, sensorials are good, texture अच्छा आता है, या उसका जो replacement है बहुत expensive है. We have stayed away from that. We have actually identified 20. There are many more, but to encapsulate our learning around this, we formulated something called Toxic 20. And we mention it on our website कि यार ये 20 ingredients हम कभी भी किसी भी product में use नहीं करेंगे. We are a cruelty-free brand, so we don't test anything on animals. Very soon we are going to be PETA certified. The process is almost complete. We are also a vegan brand. अभी vegan बोलने से कुछ चीजें कई बार नई बहुत जल्दी ध्यान में आती हैं. मिल्क, हनी, बीज वैक्स, राइट? ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज हुए हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, राइट? सो ये इंग्रेडिएंट्स हम नहीं यूज करते हैं. So, and for some of the products, it has been a challenge to formulate without these. Let's say यदि आपको कोई अभी हमारे पास कोई आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स नहीं है, यदि हमें कोई आयुर्वेदिक ऑयल बनाना है, तो आयुर्वेदिक ऑयल्स आर मेड बाय अ मेथड कॉल्ड शीर पाक. शीर is milk, पाक is boiling, पाक is पकाना, right? So you actually boil ingredients in milk to get the sattva of the ingredients out. Now, how do you modify that Ayurveda process? Because milk तो हम use नहीं कर सकते. So whenever we want to launch a range of Ayurveda products, we will have to modify that process to make it vegan. So whether we end up using soy milk or almond milk, those are some experiments which are going on. So some of these challenges were not known when we had entered. कि vegan होने के क्या क्या challenges हो सकते हैं. But that's the fun part. So tell me about the entry journey. Like आपने brainstorm किया, आपने decide किया कि ठीक है, globally like a global experiences kind of a theme is what you want to do around beauty products. फिर उसके बाद वहाँ से like that go to market journey बताओ.
So when I started thinking about Pilgrim, I was the only one. Team में कोई नहीं था. And I was looking for a co-founder. And I had spread the word around to some close friends, etc. क्योंकि ये clear था कि co-founder has to come from a very strong reference. Somebody who I trusted has to vouch for that other person. That's the clear benchmark I had. So then one of the people I got introduced was Gagan. Gagan also is from IIT Bombay 2013 batch, and he came through a very close friends reference. Pritesh Mittal, who runs a tech company called Growsto, and Pritesh and Gagan were batchmates at IIT. तो प्रीतेश ने कॉल किया और मुझे इतना ही बोला, "यार आप गगन से बात करो, आपको अच्छा लगेगा।" मैंने बोला, "ठीक है, अच्छा लगेगा बट फिर आगे क्या?" ही सेड, "नहीं आप बात करो, आप आई थिंक यू विल आई थिंक आपको अच्छा मज़ा आएगा बात करके।" एंड प्रोबब्ली ही सेड समथिंग सिमिलर टू गगन कि यार अनुराग से बात करो मज़ा आएगा। So then Gagan and me got chatting and it took the first call I think both of us were broadly decided. We didn't just verbally commit to each other but we had broadly made up our minds कि यार साथ में काम करना है। And the second time I was working out of a co-work in Andheri and Gagan came to visit. मैंने बोला ठीक है अभी फ़ोन पे बात कर लिए मिलने आ जाओ। So Gagan came over, we had a coffee and we actually committed to each other कि हम साथ में काम करने वाले हैं in 2 discussions. तो कोई बहुत ही thought through डिसीजन नहीं था ये, थोड़ा-सा इंट्यूटिव था फॉर बोथ साइड्स। जबकि नॉर्मली आई वुड पुट डाउन प्रोस कॉन्स मैं आपको बता रहा था, आई राइट डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स। गगन इज़ अ लॉट मोर इंट्यूटिव देन आई एम। I would typically, make an Excel sheet for everything. So Gagan Clay, this was natural, but for me, this decision was very intuitive. Otherwise, many other times, I would normally do the pros and cons kind of framework. एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, लाइक ऐसे सिचुएशंस में वेयर यू आर ऑब्वियसली ब्रिंगिंग मोर टू द टेबल, क्योंकि आपका वो प्रायर एक्सपीरियंस है इन दैट स्पेस, आपको वो सोर्सिंग समझ में आती है, मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया हुआ है आपने, आइडिया भी आपने ही ओरिजिनेट किया है, तो इसमें इक्विटी कैसे नेगोशिएट होती है? लाइक हाउ डू यू डिसाइड कि किसको क्या स्टेक मिलेगा? So, हमारा इक्विटी डिस्कशन वाज एक्चुअली आई थिंक 3 मिनट्स और 2 मिनट्स। मैंने गगन को पूछा सो व्हाट यू आर सेइंग, आई थिंक गगन वाज आल्सो अवेयर अबाउट दैट, राइट? एंड he I come from the sector and I have a little more experience than what he would have. तो मैंने गगन को पूछा यार व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन एंड ही कोटेड अ रेंज. He said let's say x to y, x being the lower number, y being the higher number. But he was very fair in the range, right? So जो नंबर मेरे दिमाग में था he was actually in that range. तो मैंने बोला कि आई एम कंफर्टेबल विद y. इनफैक्ट जो y था उससे मैंने 10% ज्यादा बोला बिकॉज़ दैट्स द नंबर आई हैड इन माइंड. So he said x to y and I said 1.1 of y. So for a moment he was taken aback. ये कौन आदमी है? पागल है क्या? Then he said मतलब ऑब्वियसली मुझे चलेगा बिकॉज़ मेरे दिमाग में ये नहीं था. I said नहीं, मेरे दिमाग में यही था and both of us should be comfortable with the equity split which we are having. And that was the only time the equity discussion happened between Gagan and me. उसके बाद हम दोनों ने बट गगन सेड वन थिंग वेरी क्लियरली कि यार देखो इक्विटी का डिस्कशन आज हो रहा है एंड ऑब्वियसली स्प्लिट इज नॉट इक्वल, बट आफ्टर दिस डिस्कशन गेट्स ओवर वी आर इक्वल्स. So we should have equal say in the company whatever we are doing. Obviously, I respect the fact that whatever there are a few things you will know more than me just because you've been around in the sector. But beyond that, we should both have an equal say in whatever we are trying to do, and I respected that. I told him, "Here, I'm not looking, for a senior employee, right, to come and join the team. I'm looking for a co-founder who can really come and build." उस समय पिलग्रिम नाम नहीं था, by the way. It was only a concept. I said, यार जो भी बनाएंगे साथ में बनाएंगे and both of us have to support each other in whatever we are thinking through. And then Gagan was coming out of his previous engagement and he said, यार मैं 15-20 दिन ब्रेक लेने के लिए घर जा रहा हूँ. मैं 20 दिन के बाद आके जॉइन करूंगा. तो घर गया, 2 दिन के बाद वो कुछ 2-3 दिन के लिए अपनी फैमिली को लेके कोई रिसॉर्ट हॉलिडे के लिए गया था. वहाँ रिसॉर्ट से कॉल कर रहा है, मैंने ना 50 ब्रांड नेम्स की लिस्ट बना ली है. मैंने बोला यार तू तो छुट्टी पे गया था. तो इसे नहीं, नहीं मेरा दिमाग चल रहा है, ये नाम देखो आप, ऐसा सोच रहा हूँ मैं, वैसा सोच रहा हूँ, ये वो. तो मैंने बोला ये तो बढ़िया है. आई मीन स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली एंड कम बैक. एंड जब वो वापस आया तो 250 नाम की लेके आया था. And then we did some work together, all of that. But I think that partnership for both Gagan and me has worked out quite well. And
while there is some split of responsibilities, etc., I think contribute in every function. Both of us contribute. When the two of us were there, then we started to slowly build out the team, and a couple of other people joined. Did you raise funds like before launch? So we raised some angel money. We raised some angel money. So I had sent out a couple of WhatsApp messages to some friends, people who I wanted to be part of Pilgrim, and a couple of people who had told me, "यार next life में कुछ कर रहा है तो बता देना एक बार." So, so people from different parts of my life, right? Uh, Batchmates from IIT Bombay, batchmates and dorm mates from IIM Ahmedabad, uh, my colleagues from TAS, both my co-founders, Saurabh and Sunil. Saurabh's co-founder at No Broker, both of them. Uh, I was a director at Richfield, so the founders of Richfield. Uh, vendors and business partners of Richfield. People from my building. So, मतलब आप बोलोगे ना, pick a part of your life and they are one of the angel investors at Pilgrim. We have a large cap table of 20, 21 angel investors, all of whom have contributed in some way or the other at different points of time. While we did not raise too much money, the total only 2 crore रुपए raise किए थे angel round में. But we said we will not do a formal fundraise. Friends and family लेंगे. Uh, and everything happened on WhatsApp. मैंने कुछ messages भेज दिए थे जिनको कॉल करना था. उन्होंने कुछ लोगों ने कॉल करके कर लिया कि यार ठीक है मैं पैसे भेज रहा हूँ. And otherwise फेसबुक का अकाउंट मैंने 2018 में डिलीट कर दिया था. आई डोंट हैव अ फेसबुक अकाउंट नाउ. तो बट व्हाट्सएप को तो सब कुछ पता है मेरे बारे में. So, that happened, and we were a team of 5-6 people, and including again in me there were 7 people. We started building out, and हमारे R&D and products and all of that was broadly ready by March 2020. So 6-8 9 महीने हमने लगाए to come up with a set of products, and then Modi ji came on the television, said अभी यार थोड़ा टाइम घर पे बैठो. माल वेयरहाउस में पहुंचा था और लॉकडाउन हो गया. तो वो मार्च 2020 में इन्वेंट्री भी बन गई थी, लाइक मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप. ओनली ऑनलाइन. तो उस समय तक ये समझ आ गया था कि यार ऑनलाइन एक्शन हो रहा है. डिजिटल मार्केटिंग से काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की जा सकती है. तो प्लान वाज़ क्लियरली कि खाली ऑनलाइन ही करेंगे. उस समय तक वो D2C ये वो सब समझ आने लग गया था. एंड इट हैड सो हैपेंड दैट सौरभ had met Vinay, who's the partner at Fireside, sometime in Jan 2020, and he spoke about his angel investment at Pilgrim. And then Vinay said, "ठीक है, अनुराग से बात कराओ." Uh, and Vinay and we spoke in Jan 2020 जब हमारा एंजल राउंड जस्ट हुआ था. सेल्स का चालू नहीं हुआ था, प्रोडक्ट्स भी नहीं आए थे. तो and Fireside has some internal documents around go to market, D2C playbook, all of that. I knew that these documents existed, but I didn't have access to them. So my first call with Vinay, I told him, यार ये documents, and those documents are meant for the portfolio companies. मैंने बोला देखो यार हम तो अभी fundraise कर नहीं रहे हैं, but will you share those documents with us? I don't know what Vinay thought. Either I embarrassed him so much by making this ask, or he was just being nice. He said, "ठीक है यार मैं भेज देता हूँ." So there is a set of some 10-15 documents which documented a lot of learnings from Fireside came to us before the launch. So the kind of support we have received for Pilgrim from every corner, right? And ये वन ऑफ नहीं है, राइट? तो फायर साइड से तो सपोर्ट मिला ही, बट अदरवाइज भी ऐसे कितने जगह पे, मतलब इफ आई स्टार्ट काउंटिंग द काइंड ऑफ हेल्प वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम एटलीस्ट 30 पीपल और 50 पीपल, इट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग. दैट रियली, आप मुझे गो टू मार्केट पूछ रहे थे, हमारा आधा गो टू मार्केट तो फायर साइड ने प्लेबुक में डॉक्यूमेंट करके दे दिया था. अभी मतलब किसी ने 25 कंपनियां देखी हैं, मतलब हेल्प किया, फाउंडर्स को साथ में काम किया है. तो द काइंड ऑफ एक्सेस टू डेटा एंड learnings they have, nobody else has. This was not so much on the marketplaces. This was more on the brand website. तो वो marketplaces वाली playbook उनकी अभी भी बन रही है. That in fact is supposed to come to me in a week's time. Yeah. So then and so I spoke about Vinay making the first call in Jan 2020. Then every single month Vinay and me would speak. And I was very happy to engage because the kind of learnings Vinay and Fireside had was phenomenal. And he was never, talking globe gyan, consumers को खुश रखो kind of stuff he would never say.
He would talk about तुम्हारा retention metrics क्या है, very very specific. He will say कि तुम्हारा NPS score of the brand क्या है, क्यों है, you know, पैकेजिंग में कितने GSM का पेपर यूज किया है, have you spoken to this vendor, what is your CTR, so the kind of stuff which normally investors would not talk about. ना तुम्हारा अभी टॉप फनल में क्या मैट्रिक्स चल रहा है, क्या सीपीएम्स आ रहा है, आर यू सीइंग फेसबुक सीपीएम्स गो अप गो डाउन, अभी स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स मार्केट प्लेसेस पे सस्ते चल रहे हैं कोविड के कारण, आर यू डूइंग समथिंग देयर, काइंड ऑफ स्टफ व्हिच विल इम्पैक्ट माय लाइफ दैट डे, दैट्स द काइंड ऑफ इनपुट्स रिसीव फ्रॉम देम. And then sometime in October, November, and then he had started saying here we will be interested in evaluating, we like you, but there is a very formal process which Fireside will run if you want to raise money from Fireside. In last year, 2020, October, November, we were of a certain scale. He said, "Here, ab, I think the time is right for you to raise a pre-series A, specifically if you want to work with Fireside. Because if you become a little too large, then we will not be able to come because there is a certain kind of deal size, etc. we want to look at." And we were very keen that we wanted to have Fireside on our side of the table. So have you done subsequent fundraise after that angel round? So we actually initiated the process of fundraise because विनय ने हमें बोला यार अब fundraise का time आ गया है. And like the way they had a process, then we also said yaar ki we don't know what comes out of this process, so we will speak to other fronts. So we spoke to everybody who was interested in the consumer space, and by Jan Feb 2021 हमने December में I think early Jan is when we started pitching. December में तो tech का ही काम चल रहा था. Then Jan Feb 2 महीने लगे. Feb end तक we had quite a few investors who were interested. But the moment Fireside confirmed, we said, our deal is done. We are not going anywhere else. And then there was some little bit of negotiation with them because market was willing to give a much higher valuation. They were not. But we said lower valuation पे भी करेंगे, Fireside के साथ करेंगे because we want Fireside to be a part of our capital. That happened, and then there is this very. How much did you raise? So we raised close to 12.8 crores. Rukam Capital also participated in a small manner there. We also had a couple of angel investors. So some of our existing angel investors also topped up. And the founders of Boat, Aman and Samir, they participated. Prab Kiran, who's the founder of Bewkoof, he participated in their personal capacity. And again, the philosophy was the same. If good people are interested in investing in Pilgrim, we want them. There's so much to learn from each of these founders. It is not the money which they were bringing to the table. It is that Access to ideas, brainstorming, and one more person thinking about Pilgrim at some point of time during the day, during the month. So which is why we said we will try and get a few more angels also on board. And so this 12.8 odd crores, kind of 13 crores kind of fundraise happened. And then there was this very long and strenuous period of what is called as due diligence, which I was not ready for because I thought कि हमारे accounts were in a good shape. And they actually were. That's the comment we received. But the process can be fairly taxing if you have not done it in the past. And हमारे जो पुराने फंड रेजेस हुए थे वो फैमिली ऑफिस से तो कोई बिग फोर आके ऑडिट या डीडी नहीं कर रहा था. So that journey we had to kind of undertake. That happened and it's been I think 3 महीने हो गए ऑफिशियल अनाउंसमेंट को 2-3 महीने हो गए. And it's been a phenomenal journey from there on. We had a team of 7 people in March, including me and Gagan. Now we are close to 30 people. When did revenue start? Like March में you were ready to launch. When did you launch and how did you launch? May 2020 जब मई में लॉकडाउन खुलना चालू हुआ तब हमने लॉन्च किया एंड वी स्टार्टेड सेलिंग ऑन मार्केट प्लेसेस पहले. ये लॉन्च एक्चुअली हमने किया नहीं अक्षय. हमने क्या किया, हमने बेचना चालू कर दिया. लॉन्च में तो आप कुछ करोगे ना, कुछ एक्टिवेशंस करोगे. हम मार्केट प्लेसेस पे लिस्टिंग्स हमारी रेडी थी पहले भी, हमने वो ऑन कर दी, बस इतना ही किया. बस हमें तो पता ही नहीं था क्या होने वाला है. मई 2020 में इफ यू रिमेंबर द अनसर्टेनिटी, नोबडी न्यू कि नेक्स्ट दिन क्या होने वाला है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वो रूल्स वर नॉट क्लियर. कुछ स्टेट में कुछ रूल है, कुछ स्टेट में कुछ रूल है. हाँ. एवरी डे एवरी वीक समथिंग न्यू वाज हैपनिंग. तो हमें पता ही नहीं था क्या होने वाला है. तो हमने लॉन्च तो कभी किया नहीं, हमने बेचना चालू कर दिया.
एंड वो एक्चुअली बिकना चालू हो गया. Which is when, so we never had an official launch. The first time we did like a launch activity was when we launched the second range. The Vino range. ब्रांड का लॉन्च हमने कभी किया ही नहीं. हाँ, द विनो रेंज ब्रांड का लॉन्च हमने कभी किया ही नहीं. तो बट वो सेल्स कैसे हुई? यू मस्ट हैव स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग ना? थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे थे मार्केट प्लेसेस पे. एंड आई थिंक आर one D2C overall benefited from the scenario last year, while as a country and as an economy we have had a lot of setbacks. D2C ने बहुत बेनिफिट किया इससे. विद इन D2C स्किन केयर हेयर केयर ने बहुत बेनिफिट किया. विद इन D2C ऑल्सो यदि हम ब्यूटी में भी होते लेकिन कलर कॉस्मेटिक्स बेच रहे होते, तो probably there was some slowdown there. Because people were not stepping out as much. I may not know the exact numbers, but it did not probably see the kind of uptick which hair care skincare saw. तो हमें काफी ये tailwinds मिले to support the growth in the early days. By end of 2020, what kind of monthly run rate were you doing? Like December, Jan? So end of 2020 by calendar year, I think we were at 70-80 lakhs gross sales a month. Amazing. So like in just 6 months, you were like nearing 1 CR kind of a... We were there, and again, like I keep telling you, the kind of help we have received from so many people. So one of my batchmates and friends from IIT Bombay, who happens to be staying in the same building, his name is Saket Dhankar. He also runs a D2C brand called Hawes and Kinder, and he's been retailing and selling for 1 or 2 years more than we have been. So he had really learned how to sell on marketplaces. तो जो काफी सारा 6 महीना साल भर जाता है कि चैनल को समझने में कि यार अमेज़न काम कैसे करता है, फ्लिपकार्ट काम कैसे करता है. I think those 1-2 years of learnings were available in a 1-hour crash course with Saket. And they did not stop there. Every week, every month, he would keep calling on his own and asking कि यार क्या चल रहा है? How can I help you? Right? So the kind of help Saket gave us is, and आज भी यदि हमारी टीम के पास सबके पास साकेत का नंबर है, अमेज़न में किसी को कोई भी इशू आता है, हाँ, उसी को कॉल करते हैं. मुझे कॉल नहीं करते बिकॉज़ एक्चुअली मुझे नहीं पता. वो साकेत को पहले पूछते बिकॉज़ साकेत इज़ लाइक आवर consultant for Amazon. The only thing he gets in returns is some free Pilgrim products. And ऐसा हर domain में. So if I have to go on, the kind of help. So this, Pilgrim, while the team has put in a lot of efforts, the kind of help we have received from external people who had no stake in the company. And what is your current monthly run rate? So now, August, we are, 1.7, 1.8 crores of gross sales. Amazing. Okay. The aspiration is that another 6 months to be, this 4 to 5 crores kind of gross sales monthly run rate. In D2C, typically you will see people don't talk annual run rates. People talk monthly run rates annualized because the numbers for most people are changing so fast. Yes. Last year का P&L is not as relevant as कि यार ये month में कितना किया है. हाँ, right. Yeah. By when do you think you'll hit 100 CR? Aspiration is next calendar year. Yeah, so sometime next calendar year, if you are able to hit that, that's our team's aspiration. In terms of run rate, right? Not in terms of actual 100 crore for the year. So 100 crores is basically monthly को annualize कर दो आप 8-9 crores a month kind of a run rate. Gross sales, I think our aspiration is sometime in the next calendar year. So why do you think it is selling so well? Yeah, so Akshay, I don't know if there, I think it is the different ingredients which go in the secret sauce. It is not one secret ingredient in the secret sauce. नहीं मतलब वो जैसे मार्केटिंग के 4 P's होते हैं ना, वो प्रोडक्ट, प्राइस. So actually वो 4 P's, मतलब to sound very cliche, all 4 P's are important. And then people have, the marketing gurus have kept on adding a 5th P and a 6th P and a 7th P. Yeah, right. So, one is you have to understand consumer needs very closely. That is the starting point. And I'm going to sound like, hopefully sound like an intelligent professor. But honestly, that's the right answer to my mind. You need to understand consumers very closely. Then your offering has to
resonate, whatever you have identified as the consumer need, your product and brand offering has to then cater to that need, right? And इसमें एक जो कई बार प्रॉब्लम आती है कि the need you have identified may not be the real need or may not be large enough, right? And it is a little bit of a matter of luck. It is not only about intelligence and experience. So to say कि next time I go and look for a consumer insight, I will go and hit on a large idea again. There is no guarantee. So luck has played a lot of role in many of the things we have done, right? So be able to identify the insight on which Pilgrim is being built, I think that was a lucky break for us. Then I think what helped was the experience in the sector where we understood formulations slightly better than many other players in the market. That was a clear, unfair advantage. So I think as a business, if you have some unfair advantages which others don't have, right, it just helps the business. So this was one of the unfair advantages, that we understood formulations, which is the core of the product really. We also understood sensorials. Having run spas, salons, we understood what consumers look, feel, texture, fragrances, and we made mistakes. It's not that we got everything right, but we have hopefully learned quickly from our mistakes and corrected it. Uh, Third is the packaging. So you will see I'm talking about the 4 Ps, but because we are selling online, the consumer only going to experience the brand through the imagery which you create online. राइट, अभी यहाँ पे दुकान तो है नहीं कि जहाँ पे मैं प्रोडक्ट के हाथ में देख लूँ, टेक्सचर फील कर लूँ, कोई सैंपलर नहीं है. There are two things to the imagery. One is the actual quality of the packaging, and second is then how do you demonstrate the packaging through other imagery, supporting imagery, right? That imagery is what is going to establish trust for a consumer to try you out. Then go to market, or understanding of how channels work. So the way an Amazon works is very different from the way a Nykaa works and the way a Flipkart works versus the way a D2C works. So understanding of how these channels work is very important. And to be able to deliver all of these, a team which is saying, "Yaar, jo chahiye karenge." Right? We had a very lean team of 7 people, including me and Gagan. But the team saying, "Jo chahiye karenge." I am not going to worry about anything but doing what is right for the consumers and what is right for the brand. We also spent a fair bit of resources even early on in taking professional help where help was needed. Okay. Like what areas? Like the brand name. ब्रांड का प्रोपोजिशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, बट हम जो नाम खोज रहे थे, वी वर both Gagan and me were not happy with the names we were coming up with, and we spent a fair bit of time doing that. And we said, "यार मजा नहीं आ रहा है." Then we took the help of a consultant, specializes in brand, and we love her and the kind of work she's done and contributed to Pilgrim. She is the one who took us through the thought process of how a brand name should be coined. And out of the many options, Pilgrim was one of them. And वो पिलग्रिम देखते ही कुछ वो घंटी बजी, यार ये है आउट, एंड देयर वर अदर नेम्स व्हिच वी हैड लाइक, बट पिलग्रिम में कुछ शुरू से लग रहा था यार इसमें कुछ है. She helped us craft. She is the one who wrote the tagline, "Join the journey." She helped us refine the brand proposition slightly better. So many our packaging was developed by a boutique agency based out of Argentina. So many of these investments we did upfront. हमने उसमें खर्चा करने से, while we were हमारे एंजल राउंड मैंने आपको बताया ज्यादा नहीं था. बहुत चीजों पे हमने बहुत रिसोर्सेज कंट्रोल करके रखे थे, बट wherever we saw कि यार ये कम नहीं कर सकते, we said here we will not try to save money. Whatever is required, we will do. And your manufacturing, warehousing, logistics was all outsourced. No? None of that was in-house. All of that was outsourced, and again, lot of support and help came from other people. So and people who would normally not do certain MOQs decided to do those MOQs for us. What is MOQs? Sorry, again industry jargon. MOQ is a minimum order quantity. So when you go for production of anything, आपको jar चाहिए, label चाहिए, carton चाहिए, फेस वॉश बनवाना है, प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, सब चीजों के लिए एक मिनिमम ऑर्डर होता है. नहीं तो उसका जो तभी उसके लिए वायबल होता है. तभी उस फैक्ट्री के लिए वायबल होता है, नहीं तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है. वायबल तो आप तो 1 यूनिट भी बना सकते हो, बट कॉस्ट उसका काफी हाई होगा.
स्टार्टिंग में व्हेन यू आर अ न्यू ब्रांड यू डोंट वांट टू बी इन्वेस्टिंग टू मच इन एवरी एसकेयू। तो वो आई थिंक हमें काफी सपोर्ट मिला फ्रॉम द एंटायर पार्टनर इकोसिस्टम। हमने जाके सबको रिक्वेस्ट किया कि यार आज हम छोटे हैं, आप हमको आज सपोर्ट करो, होपफुली हम बड़े हो जाएंगे, हम बिजनेस मूव नहीं करेंगे, आप बनाना हमारा काम, आप हमारे साथ काम करो आगे भी। एंड वी हैव केप्ट आवर प्रॉमिस देयर। तो अभी आपकी 0 to 1 जर्नी कंप्लीट हो गई, वो 1 to 100 जर्नी में व्हाट डू यू थिंक विल बी द चैलेंजेस दैट यू विल नीड टू नेविगेट? वन इज continuously innovating on the product and the brand front। हमारा तो ब्रांड ही इनोवेशन का है। हमने अभी 2 ट्रेडिशंस लॉन्च किए हैं। अ, अगले दिस कैलेंडर ईयर इटसेल्फ बिटवीन नाउ एंड मार्च we will be launching at least 3 to 4 new traditions। What all are they? They are from different parts of the world and allow me a little bit of time to kind of तो दिवाली के टाइम में नेक्स्ट ट्रेडिशन आएगा। तो अभी देखिए दुनिया में 250 देश हैं जो यूएन में आई थिंक हैं, और भी होंगे जो मुझे पता नहीं है। अभी कौन से 5 या 4 या 3 हमें अगले लॉन्च करने हैं, कहाँ के ट्रेडिशंस, बिकॉज़ एवरी कंट्री हैज़ दैट ट्रेडिशन, राइट? राइट, हाँ। तो कई बार हम बिकॉज़ बहुत एक्सप्लोर नहीं किया होता तो हमें लगता है नहीं ये तो आयुर्वेदा तो इंडिया में ही है, तो नेचुरल ब्यूटी तो इंडिया में ही नहीं, ऐसा नहीं। आप जाओ हर देश के पास अपना एक नेचुरल ब्यूटी ट्रेडिशन है, वहाँ के इंग्रेडिएंट्स है, वहाँ का स्टाइल है, राइट? इवन आयुर्वेदा आप देखें तो केरला आयुर्वेदा इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आयुर्वेदा व्हिच इज प्रैक्टिस्ड इन महाराष्ट्र। इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयुर्वेदा का। एक्चुअली आप कोर देखेंगे तो क्या है? आयुर्वेदा का कोर ये है, आपके आसपास जो मिल रहा है, अब उस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उनको ही आप यूज करो। तो यदि आप श्रीलंका में हो तो आप वहाँ के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे, यदि आप जापान में हो तो आप वहाँ के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे। तो इन सब पे ऑल ऑफ दिस इज़ आयुर्वेदा। आई कैन से कि कोरियन ब्यूटी इज़ आल्सो आयुर्वेदा, दैट्स द फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेदा, राइट? तो ये अभी द सो बीइंग एबल टू कंटीन्यूअसली इनोवेट एंड स्टे रिलेवेंट फॉर द कंज्यूमर्स, उन्हें पसंद आना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं। बिकॉज़ फाइनली कंज्यूमर्स आर गोइंग टू डिसाइड हाउ फार पिलग्रिम गोज़। Uh, so that is the key, I think, task to be achieved. And to be able to do that, the team which we have now, close to 30 people and growing, I think another month or so, we might be 35 people and then 40. So to keep the team engaged and maintain the culture which we have so far, that is I think an important thing to address। जब टीम छोटी होती है तो आप सबके साथ पर्सनली टाइम स्पेंड कर पाते हो, कोच कर पाते हो, गाइड कर पाते हो। नाउ दैट विल हैपन टू अ लेसर फ्रीक्वेंसी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द So in a way, what you're doing is fast fashion for beauty. Winter collection, fall collection, summer collection. वैसे ही you're doing something like that for beauty. टीम। मुझे फैशन ज्यादा समझ नहीं आता अक्षय, बट आई थिंक वी आर व्हाट यू आर राइट, व्हाट वी आर डूइंग इज फैशन। फास्ट फैशन में भी कि हम 15 दिन में आपको कॉन्सेप्ट टू स्टोर डिलीवर कर देंगे, व्हिच इज व्हाट प्रोबब्ली ज़ारा डज, या 20 दिन में। वी आर नॉट डूइंग फास्ट फैशन, बट वी आर डूइंग फैशन। We will continuously innovate and stay relevant for our consumers। तो जो आपके ये launches हैं, are they lifetime? Like जो Korean launch था, is it lifetime or will it, limited production and then move on to next? नहीं, अभी हम लिमिटेड एडिशंस नहीं कर रहे हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी माइट डू लिमिटेड एडिशंस आल्सो। Right now, if you launch a tradition, then it's like launched for life, basically. Unless sales are not there or something like that. See, what happens is that consumer needs are actually very niche and very specific। So Akshay and Anurag are on this call, we could both be, डेमोग्राफिक्स आप देखोगे तो 40 year old प्लस माइनस, मेल, प्रोफेशनल, MBA टाइप्स, earning a certain kind of income, certain kind of skincare habits, but that is very broad। अक्षय कुड बी वरीड कि यार ये ना मैं लेट नाइट कॉल्स कर करके मेरे अंडर आई में अभी डार्क सर्कल्स हो गए। अनुराग कुड बी वरीड कि यार मेरे ना हेयर बहुत ड्राई हो रहे हैं विंटर्स में, and I have fine hair, versus somebody has thick coarse hair and hair dry हो रहे हैं। So the consumer needs are very very specific। The opportunity D2C offers
is to be able to serve very niche audiences. So legacy brands long tail. So we are long tail by nature. अनलाइक लेगेसी ब्रांड बिकॉज़ उनके पास तो जब तक लार्ज अपॉर्च्युनिटी होगी नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सपोर्ट करेंगे? हमें तो सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउसिंग से करना है। किसी एसकेयू के 50 यूनिट भी बिक रहे हैं, बट दे आर वेरी रिलेवेंट फॉर दोज़ 50 कंज्यूमर्स इन अ मंथ। वी कैन डू दैट बैच एट अ सर्टेन स्केल। हम 6 महीने में एक बार बना के वी कैन सर्विस दोज़ 50 कंज्यूमर्स। Wow. Okay. So, which is fairly disruptive, unique, different from what all other brands have followed as a. Matlab, if you look at say Mama Earth, which is like another D2C brand which has really scaled up. So, unke SKUs were fairly limited. It's only like in the last 1 year where they have increased SKUs. So, what makes you so confident that this large SKU strategy will pay off? Really, time will tell us, Akshay. That is right. That is the honest answer, right? This is what we are building on. Whether this is the right strategy or not, time will tell us, God will tell us. We will do what is right by our consumers. See, our fundamental belief is if we do the right things for the consumers, consumers will reward us sooner or later. Our consumer understanding suggests that people are looking for borderless experiences, people are looking for certain kind of products, people are looking for clean beauty, people are looking for vegan brands, people are looking for toxic 20 free products. All of those check boxes we have met as a brand, and people are saying मेरी जो specific consumer need, मेरी जो specific skin care hair care need है वो serve करो. So far the feedback has been positive, I can only say that. Even today at a scale which is not very large, from a larger industry perspective, we have 35 SKUs. So for a young brand to have 35 SKUs is, I mean, it's larger than what we, yeah, it's not something which all brands will do. And some of them don't sell too much, but we are okay. जैसे मैं बाथ एंड बॉडी आपको बता रहा था, अभी इंडिया में बॉडी बटर कम लोगों को पसंद आता है एंड केवल विंटर्स में यूज करता है बिकॉज समर्स में लोगों को लगता है बॉडी बटर की जरूरत नहीं है. वी आर ओके, लेकिन जो जिनको पसंद आता है हमारा बॉडी बटर बहुत पसंद आता है. तो इसमें आपकी वो एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड वो आपकी जो सप्लाई चेन स्ट्रेंथ है दैट इज मेकिंग दिस पॉसिबल ना, बिकॉज यू ऑलरेडी नो के वो creating that product with small quantities is something which you are able to manage, which probably an outsider like say the Mama founders were not from that space, तो वो शायद वो कर ही नहीं पाते जो आप कर पाए हो in terms of. I will not, Mama Earth has done a phenomenal job in building, and I have great respect for both the founders. A comparison is not fair. We are too young, too small compared to Mama Earth. I think, I think it's about the intent, Akshay. So if a brand wants to do what we are doing, a brand can do. It will take time. The advantage we have had is हमें थोड़ा सा lubrication मिला है सिस्टम में, कि हमें थोड़ा सा फास्टर एक्सेस मिला है, हमें थोड़ी सी फास्टर चीजें करने का मौका मिला है, एंड कम बर्न के साथ करने का मौका मिला है. बट इफ अनदर ब्रांड्स वांट्स टू डू दिस प्लेबुक, कैन दे डू इट? आई थिंक ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है. कैन यू डू इट राइट? विद लेस बर्न पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जिस बर्न में आपने किया है वो पॉसिबल नहीं होगा. वो शायद मुश्किल है. Which is why, like I said, there are so many people who have contributed to Pilgrim directly and indirectly, that to not acknowledge them, would be a crime. So what is your core customer demographic? So very interestingly, when we started, we actually researched the millennials and वो सब हमने काम किया. And डेटा का तो आपको पता है, इधर से देखोगे उधर से आप वो कंज्यूम इंसाइट निकाल सकते हो. And I will now quote a number which you can interpret both ways. So millennial audience is typically this 20 to 35-year-old, right? 60% of our sales comes from millennials. Right? अभी मैं इसी नंबर को दूसरे तरीके से कोट करूंगा. 40% of our sales comes from the age above the age group of 35. Right? So the insight of people wanting borderless experiences, it is a lot more predominant in the millennials. But is it completely missing in the older audience? No.
So it is there, it may be to a lower extent, and this need is not getting met across age groups, which is where, I think we are getting a fair bit of traction from the slightly older age group also. The other interesting fact is 65 to 70% of our sales comes from tier 1, tier 2, tier 3 towns, which is basically non-metros, or only 30% of our sales comes from metros, Okay, which is amazing. which we are very happy about. Which we are very happy about. So we are in the 300 to 700 price point across SKUs. Uh, how the how the market looks at this price point is, this is called a mass premium kind of a price point. So usually, the FMCG brands, the mass market brands who have a wide range of distribution, the MNC, they will typically operate between 20, 30 to 150, 200 rupee kind of price point. And the FMCG premium brands will typically, अब उसमें भी क्या है, सबके बहुत सारे आर्किटेक्चर है, तो टू गिव वन एग्जांपल मे और मे नॉट बी द करेक्ट बेंचमार्क. तो 200 से 400 के बीच में एफएमसीजी के प्रीमियम ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं. D2C brands, many of them operate in this 300 to 700, 800 kind of price point. But इसमें भी क्या होता है, certain brands for a specific SKU are at the 300 rupee price point. Certain brands are at a 450 rupee price point. So let's say if you're talking about a face wash, हम उसी प्राइस बैंड की बात कर रहे हैं, बट 300 रुपीज और 450 रुपीज में 50% का प्राइस का डिफरेंस है, राइट. सो इस प्राइस बैंड में भी काफी सारे प्राइसिंग प्लेस पॉसिबल हैं फॉर ब्रांड्स. एंड देन द प्रीमियम ब्रांड्स विल टिपिकली ऑपरेट इन दिस 700 to 1500 rupee price band, and luxury brands will operate. I'm just doing only purely a price segmentation, no other filter, right? एंड 1500 के ऊपर या 2000 के ऊपर आप बोलो कि ये लग्जरी ब्रांड्स है, जिनका एक सिंगल प्रोडक्ट 1500 2000 के ऊपर का. हाँ, जो typically imported and सिर्फ malls में बिकते हैं. करेक्ट. So you are like, as compared to other D2C brands, you're like similarly priced? Yeah? We are comparable depending on, no, we are one notch higher in many SKUs. Sometimes we are competitively priced. So either we are at par or one notch higher. We are typically not lower than the other D2C. And your sales is still driven by performance marketing? Part of it is performance marketing, but a fair bit of our sales happens through, the brand, what is called the brand experience. Like repeat purchase? Repeat is one. The second is we do a lot of engagements with influencers. That is an important part of the channel. Media mix. We work closely with bloggers, YouTubers, to try and engage them in a conversation and try and get their feedback. All of that. That has also helped. But the one data point, see, we don't know what kind of sales are happening on a marketplace only through our brand search. But ad wala panel se you get an indication, so it's a proxy कि कितने ब्रांडेड आपके ad searches हुए. Our sense is, this is not an exact data point, 40 to 50% of our sales happens from branded search terms. Like someone searching for Pilgrim instead of searching for cream. That's right. So either Pilgrim or Pilgrim face cream or Pilgrim venotherapy cream, that kind of a, जहाँ पे Pilgrim word use हुआ है. So we don't have exact data points, but our evidence is suggesting it is 40 to 50%, which we are very happy with. We would want this number to be higher, but this indicates the strength of the brand. कि लोग ब्रांड खरीद रहे हैं कि दिख गया, पसंद आ गया, ले लिया. And what is your split, how much through your own website, how much through e-commerce marketplaces? So currently, our website contributes around 25% of the revenues. Aspiration is to take it up to 30-35%, and the other 75% comes from where Nykaa, Amazon, Flipkart are very important channel partners. We are now going to be available on Flipkart and also. So far we were not. But Amazon must be the largest, no? Nykaa and Amazon both are neck to neck. कभी ये आगे निकल जाता है, कभी वो आगे निकल जाता है. And you plan to like go for offline distribution? Not in the near future. Eventually, yes, because like we spoke about the brand is about borderless experiences and not just about borderless beauty experience. It is beyond beauty, right? So we want to offer offline experiences for our consumers. Even before we go offline, we will start maybe doing offline events, right? Abhi events possible nahi hai given the environment, but probably 3 months, 6 months, whenever the conditions allow us. What kind of events? मतलब
Do you mean events, or do you mean like the activation in malls where people try the product? नहीं, वो तो कंज्यूमर एक्टिवेशन हो गया। मैं ब्रांड एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर लॉन्चिंग अ फ्रेंच रेंज, व्हाई कांट वी डू अ फ्रेंच क्यूजीन टेस्टिंग इंस्टेड ऑफ फ्रेंच प्रोडक्ट सैंपलिंग? सैंपलिंग तो साथ में हो जाएगी। हाउ डू वी ब्रिंग फ्रांस अलाइव टू पीपल इन इंडिया? बिकॉज़ दैट्स व्हाट द ब्रांड इज अबाउट। कैन वी डू अ मूवी फेस्टिवल, व्हिच इज व्हिच इज इंटरनेशनल सिनेमा? आई डोंट नो व्हाट द मैनिफेस्टेशन वुड बी इवेंचुअली। Yeah. So in a way, the approach of tradition wise is a lot like how the smartphone companies have like launches, like iPhone 10 launch, iPhone 11 launch, and people wait for the launch, and each launch is in itself a big event. And so in a way आपका भी थोड़ा वैसी cycle eventually set हो जाएगी, where there are like people waiting for the next launch, and each launch is a big event, and launch करते ही YouTube is full of reviews of the products, and जैसे अभी स्मार्टफोन्स में होता है basically. तो हमारे बिलासपुर में बोलते हैं, अक्षय आपके मुंह में घी शक्कर। But yes, we will be very happy when that starts happening. It has started happening in a very small manner right now, but I think yes, that's where we want to be, where people really because it will not be what the brand is doing. It is what the consumers wanted the brand to do. So my last question to you, what's the advice that you would give to young B school pass outs who are like full of naive ideas, जैसे आपने naive ideas के साथ शुरू किया था पहला business, what advice would you like to give them? तो अक्षय, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि मेरे पास कभी भी छोटा आंसर नहीं होता, तो आई विल हैव अ लिटिल इलैबोरेट आंसर, right? And I will not call it advice, but I will call it my life experiences, and some people may find it relevant. So one of the key learnings I've had is glamour of a sector or a business does not equal to large business opportunity, and definitely not equal to profitability, right? So don't get swayed by what's hot today. You know, you look at hotel industry, airline industry, and I'm not talking COVID, right? They've always been glamorous, but very, very difficult businesses to make profit, right? And ये startups में भी होता है. I'm taking an example which is slightly more corporate like. So go by where you have an unfair advantage. Where can you win? Right? If you identify your unfair advantage, जहाँ पे you have a right to win in some way. हाँ, बिल्कुल, जैसे Pilgrim में you have an unfair advantage. So some unfair advantage we have at Pilgrim. So that's what is helping us scale so far, right? The second is it's a marathon. It's not a sprint. थोड़ा सा cliched है. But what does this translate into? यदि ये marathon or life business is going to be a marathon. So the first thing is आपको पता है ये marathon है, तो सबसे पहले तो training करो, right? And the training can happen in several ways now with online opening in so many ways. If you are the kinds जो fight मार के information ढूंढ के सीख सकता है, then YouTube is your go-to place. If you are the kinds who like structured information to be presented to be able to learn, pick up books, pick up courses. But for even the most niche topics you want to learn, I think there is training available. The second and a little ignored aspect of life and business is, so marathon की बात कर रहे हैं तो हमने training की बात की, nutrition and food, and literally that nutrition and food, right? So I heard Zig Ziglar gave a very good example which resonated with me. He said, यार यदि तुमने एक डर्बी विनिंग हॉर्स खरीदा है, तो डर्बी के हॉर्सेस तो बहुत ही महंगे आते हैं, वो शायद 1-2 मिलियन डॉलर में, मतलब 5, 10, 15 करोड़ रुपए में एक घोड़ा खरीदा है। अभी आप उसको क्या खाना खिलाने वाले हो डर्बी जीतने के लिए? आप उसको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने वाले हो कि आप उसको हाईएस्ट क्वालिटी न्यूट्रिशन खिलाने वाले हो? यदि आप एक डर्बी के घोड़े को इतना अच्छा खाना खिलाते हो, तो आपकी बॉडी, व्हाई शुड इट बी ट्रीटेड एनी लेसर इफ आई मीन पुटिंग अ प्राइस टैग, राइट? So if you are in the marathon, this gets missed out, and I did that mistake for a very long period of time. I am still a foodie. I love my junk food, but I balance it out now. Till the age of 35, I was living on junk food. After 35, and with time more and more, I am balancing the good food with the junk food. The third part is to be well rested. Uh,
So, being able to go to work with a fresh mind, just logging it out can sometimes, fatigue you, kill innovation, kill creativity. And one of the things which I have learned and which has really helped me is meditation. So I learned how to meditate in 1998. It's been now close to 14 odd years. Almost every single day of my life, I spend between 30 to 60 minutes meditating. Right? जिस दिन कम होता है उस दिन 30 minutes है. So I think that has really, really helped me. The one last thought I want to leave is delete your social media accounts if you can. फिर लोग आपका ऐड कैसे देखेंगे? वो मैं भी लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर से बात नहीं कर रहा हूँ, right? And so I actually have an Instagram account because I need to see how Instagram behaves. But I have no friends added there. Nobody knows there. वहाँ पे एक black wall की image डाली हुई, तो nobody will ever follow me. I've never posted anything, right? So it's like a dummy account. नहीं हो सकता ये पॉडकास्ट सुन के you might get some followers now. You can't find me if you go and search for Anurag Kedia. LinkedIn पे मेरा एक account जरूर है जहाँ पे मैं active हूँ थोड़ा सा, because I get a lot of relevant business connects from there. But Twitter पे एक account है जो मुझे पासवर्ड याद नहीं है, Facebook पे account है नहीं, Instagram का account यदि कभी लॉग आउट हो गया तो शायद लॉग इन नहीं कर पाऊंगा. Deleting is going to be a challenge. यदि वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट बी वेरी कॉन्शियस ऑफ हाउ मच टाइम यू सेट असाइड अ टाइम. फिर दिन में 15 मिनट, आधी घंटा, you decide how much you can afford to spend on social. So that was Anurag Kedia telling us all about his journey of building Pilgrim. If you'd like to know more about this wonderful venture, do log on to discoverpilgrim.com. This episode of Founder Thesis podcast is brought to you by Long Haul Ventures. Long Haul Ventures is the long haul partner for founders and startups that are building for the long haul. More about them is at www.longhaulventures.com. Longhaulventures.com. 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 Longhaulventures.